Good morning, students. We were doing the chapter of dispersion. Today is the lecture 2 on the same chapter that we are studying about the standard deviation, because this time mean deviation, range, and so many other numericals have been deleted by CBSE from the syllabus. So let it study after dispersion standard deviation. So standard deviation is simple definition is the square root of arithmetic mean of the squares of all deviations. Okay, so when we are doing the squares of all deviation, or we can say that it's a square root of arithmetic mean. Okay, it was firstly used by Carl Pearson in the year 1893. Okay, and this is the most commonly used measure of dispersion. So let it start the numerical. These are some of the formulas of related with the individual series. One by one we will do individual series, and then discrete series, and then frequency distribution or continuous series. Okay, students, I have already made the playlist from the different chapters, so you can check out my playlist for detail or videos of all the chapters. Fine. So calculation of standard deviation in the individual series, we have a three method: actual mean method, assumed mean method, and step deviation method. Okay, these are the formula: sigma x square upon n, or you can write this formula sigma x minus mean upon n whole square. Okay, so just mind it one thing, students, as it's we are calling economic as a science. So science is a systematic body of knowledge. Okay, so exactly, I just want to clear one thing: if you really want to learn this chapter, the mean chapter must be clear to you, because these all our chapter are related with each other. अगर आपको mean नहीं आता तो it's difficult to understand to this chapter. So better if you are not aware, or you have not done the mean chapter, so firstly complete this chapter of mean and then do the standard deviation. Assumed method: sigma d square upon n minus sigma d square upon n whole square, and then under root. Okay, so same as it is, we will get all the formulas. Okay, so let us start with the numerical, because numerical portion. Suppose this type of question would be given to you: calculate standard deviation, and they will give you the x only. Okay, so x is over here 5, 8, 7, 11, 14. As I told you earlier, students, so many times, whenever you are calculating any numerical, फर्स्टली यू आर सपोज टू राइट द फार्मूला, क्योंकि जब आप फार्मूला लिखते हैं तो देन यू कम टू नो कि मुझे कैलकुलेशन के लिए चाहिए क्या. सो आई नीड अ सिग्मा एक्स. ओके, सिग्मा एक्स, आई होप सिग्मा एक्स इज clear that by adding all the unit, what we will get? 45. And n is the number of unit. So 1, 2, 3, 4, 5. So we are getting mean is equal to, firstly I am going to calculate the mean, because I need over a sigma x square over here. So that is 9. So mean is 9. So the next step is that is x is equal to x minus mean. So what is x? X is 5, mean is 9. So we are going to deduct it. Okay, so minus 4, minus 1, minus 2, 2 and 5. I hope it is clear. मैंने ये सारे माइनस के 8 minus 9, 7 minus 9, 11 minus 9 and 14 minus 9. Now we are going to, what we need a square. So x square. Okay, so by squaring it, squaring कैसे करते हैं? By multiplying with the same unit. 4 into 4, that is 16. 1 into 1, 1. 2 into 2, 4. 2 into 2, 4. And 5 into 5 is 25. Okay, now I need a sigma x square. Sigma x square by adding all the unit. So by adding all the unit, what we are getting? 50. So sigma x square is 50. Number of item are 5. So how to do it? Firstly, you are supposed to divide it. 50 divided by 5, that is equal to 10. अब जो 10 आएगा, you are going to under root it. As you are 11th and 12th, you are not allowed, because CBSE is not allowing the students to use the calculator. So you are supposed to find out the square root by your own self. So by calculating, I hope that is clear how to calculate the square root. Okay, by making this. Okay, 3 3s are 9. Okay, I hope that is clear to you. Now square of this 6, and then
1.1 is over there. So by this way we can calculate the square root of the 10. Fine. Next is the formula direct method. Sorry, it's not a direct method, it's a assumed mean method. Okay, so how to calculate it? Sigma dx square upon n minus sigma dx upon n whole square. Okay, so let it calculate it. As serial numbers are given to you, number x is already, I have put the same formula. ठीक है, सेम मैंने न्यूमेरिकल लिया है, आप नॉट द फॉर्मूला, न्यूमेरिकल. सो 5 8 7 11 14. व्हाट आई नीड? सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एन होल स्क्वायर. आपको पहले भी मैंने बताया डी कैसे कैलकुलेट करते हैं इन मीन चैप्टर. मैंने अभी बताया कि जिन स्टूडेंट्स ने मीन चैप्टर किया उन्हें बड़े इजीली समझ आ जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट डी. डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए. सो इट मीन्स मुझे ए भी चाहिए और एक्स आई होप इट्स ओवर हियर. ओके, एक्स आपको पता है ये रहा, तो ए एज्यूम्ड करना है. सो यू कैन एज्यूम एनी यूनिट. आई ऑलवेज चूज द मिडल वैल्यू. ओके, आप कोई भी यूनिट में एज्यूम कर सकते हैं, बट अगर आपने देखा तो मैं ज़्यादातर मिड वैल्यू ही चूज़ करती हूँ. ठीक है, सो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए. आई होप यू आर गेटिंग हाउ टू कैलकुलेट इट. माइनस करती जा रही हूँ मैं 5 माइनस 7 जो आपने एज्यूम किया. ए एज्यूम, प्लीज़ काइंडली मेंशन इट वेन एवर वॉट एवर यू आर एज्यूमिंग. अगर आप जैसे ए इज इक्वल टू 7 आपने मेंशन किया, सॉरी फाइंड आउट किया है, एज्यूम किया है, सो जस्ट राइट ए इज इक्वल टू 7 ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो. -2 1 0 4 and 7, and then d square. D square is again 2 into 2 4 1 0, 4 into 4 16, 7 into 7 that is 49. So what I need over here? Okay, so this is rough part of it. Sigma d square, sigma d square. So sigma d square by adding all this unit, so 70. Number of item, how many items are there? I'm not going to add it. माइंडेड बच्चे, बिकॉज स्टूडेंट्स आर जर्नली कन्फ्यूज. वो कई बार क्या करते हैं, इन्हें प्लस कर देते हैं. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सीरीज तो आपने इसे प्लस नहीं करना, सिर्फ यू आर गोइंग टू काउंट 1 2 3 4 5. सो दिस इज 5 एंड देन सिग्मा डी, आई नीड अ डी. सिग्मा डी इज बाय 4 plus 7 and minus 4 plus 7 plus 4 plus 1 and minus 2, we will get the value is 10. So 70 minus 5 minus, I'm just putting the value. Sigma d कितना है आपके पास? 10. Number of item कितनी है? 5. So square. Fine. So again हम इसको इसमें से डिवाइड करेंगे एंड बाय डिवाइडिंग इट वी विल गेट 14. एंड देन आप इसको भी आप कुछ यू कैन डू इन डिफरेंट वेज. आप इसको 5 2 इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यू विल गेट 2 एंड 2 into 2 4. ओके, सो 14 minus 4 that is 10. सो अंडर रूट 10 का निकालेंगे तो यू विल गेट दैट इज 3.16. So your answer is 3.16 because I have used the same numerical, इसलिए आंसर भी आपका सेम आया. And today we are doing the last formula, discrete series. Tomorrow we will do it. This is a step deviation method. Step deviation मीन के चैप्टर में हमने ये सब कर रखा है. ठीक है, दिस इज़ द न्यूमेरिकल गिवन टू यू. मैंने इसको टाइम कहाँ वेस्ट हो, तो ऑलरेडी हैव रिटन द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग ओवर हियर. सो एक्स आपको दिया होगा, फ्रीक्वेंसी आपको दी होगी. पहले आपने क्या काम करना है? Yes, you are right student. I hope you are answering that you are supposed to write the formula over here. Sigma f d dash, d dash. So d we know how to calculate d. d calculate करने के लिए हम क्या करते हैं? x minus a. So d dash कैसे calculate करेंगे? x minus a upon c. Fine. So let it see how to. d is equal to x minus a. So अभी सबसे पहले आपने क्या काम करना है? आपने जो है assume करना है. ठीक है, so here we are doing the step deviation of the same formula. So d is equal to x minus a. a क्या assume करेंगे? x में से. So I have assumed 10. So 5 minus 10, 10 minus 10, 15 minus 10 and 20 minus 10. I hope that is clear to you. Now what I need fd. ओके, सो हमें एफ डी चाहिए. ठीक है, तो हम हाउ टू कैलकुलेट द एफ डी ओवर हेयर.
दैट इज c. सबसे पहले x माइनस ए अपॉन सी, x माइनस ए अपॉन सी, x माइनस ए ऑलरेडी आ गया, c इज अ कॉमन फैक्टर. 5 and 10 कितना डिफरेंस है, 5 5 5, सो कॉमन फैक्टर इज 5. सो 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू -1. okay, so 0 divided by 5 which is equal to 0, 5 upon 5 which is equal to 1, and 10 divided by 5 which is equal to 2. okay, again I am making you clear, x minus a upon c. x minus a already आपके पास आ चुका है. कॉमन फैक्टर मतलब डिफरेंस कितना है, 5 5 का डिफरेंस है. सो यू विल गेट दिस वैल्यू. नाउ एफ डी डैश, f and d dash, by multiplying it we will get the value of it, which is equal to -2, 0, 4 and 3. 3 to the 6. Now we need a d dash square as well. So d dash square is 1, 0, 1 and 4. ओके, सो डी डैश स्केयर कैसे किया, ये जो डी डैश है, दिस डी डैश, इसको स्केयर कर दिया, 1 into 1, 0 into 0, 1 into 1 and 2 square. Fine. Now I need a f d dash square. f d dash square as I have written over here. कैसे कैलकुलेट करना है इसको, f d dash. okay, so f d dash into d dash, f d dash is here, d dash is here. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 0 and 4 into 1 4, 6 into 2 which is equal to 12. so let it see what we need. sigma f d dash, sigma f d dash कितना आ जाएगा आपके पास, let it find out where is it, it's over here. okay, sigma f d dash, sigma f d dash. so I'm just putting the value over here which is equal to 8. so sigma f d dash, okay, sorry, I need a sigma f d dash over here, not sigma f d. ठीक है, तो sigma f d dash square is equal to 18 which is equal to 8. ठीक है, so 18 by 10 minus 8 by 10, I'm just putting the value, okay, into common factor कितना था, 5. so इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, इसका स्क्वायर रूट कीजिए, एंड यू विल गेट 1.8 ओवर हेयर. हेयर यू विल गेट 0.65, सॉरी 64. नाउ जस्ट रिमेंबर इट, इसको आपने इसके साथ, नाउ दिस इज अवे फ्रॉम हेयर इनटू 5. ओके, सो व्हाट यू विल डू, इन दोनों को माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, एंड देन वॉट एवर यू विल गेट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 5. So our answer or standard deviation is 5.38. I hope it is clear to you. Thank you, students.